you will find this as a very surprising thing. In my entire schooling, हमें कभी नेशनल एंथम पे खड़ा होने के लिए अपनी क्लास में या अपनी स्कूल में नहीं बोला गया. Seriously? In my entire life in my school, I have never seen a tricolor being unfurled on 15 August or on 26 January. Around first 20 years of my life, we have seen so many terror attacks in Kashmir that it used to be a part of our life. These fighters from those places would then come to Kashmir and start, Mercenaries mercenaries from those areas would come, and they used to have these long machine guns with them, and they used to be very ruthless. They would then maybe in a couple of days they would either beat you up, or then somebody would say that okay, this family is a pro-India family, they need to be killed. What is up, my friends? Welcome to another episode of Dostcast. My name is Vinamr Kasana. If you're new to our YouTube channel, please subscribe. Today's guest is Shah Faesal, Deputy Secretary in the Ministry of Culture. He has served as a decorated IAS officer in different parts of Kashmir, and इन्होंने UPSC एग्जाम को टॉप करा था 2010 के अंदर. आज की कॉन्वर्सेशन के अंदर हमने UPSC की बात तो जरूर करी, IAS होने की बात भी करी. And so we had the opportunity to have a very difficult but enlightening conversation about the lived reality of today's Kashmiris and what Kashmir used to be back in the days, militant-ridden and full of terror, and what it is now, and the many facets of being a civil servant in the Indian administrative services, and along with that, a little bit of Sufi philosophy, a little bit of Western philosophy, a little bit of his lessons at Harvard, and many other things. I don't think you have heard a conversation with an IAS officer in India like the one you're about to hear today. The episode with Shah Faesal begins in 3, 2, 1. Mr. Shah Faesal, welcome to Dostcast. Thank you so much. आपने अपना इतना छोटा सा कम्यूट करके आप यहाँ हमारे पास आए. I wanted to start at Harvard Kennedy since you were just discussing it, right? So you did a sort of break in your career and chose to go on a Fulbright scholarship there, right? अब मैं जब अंडरग्रेड के लिए अप्लाई करा था, बीच में कुछ स्मार्ट लोगों ने बताया कि शेवनिंग स्कॉलरशिप होती है यूके की, एक दो और होती हैं, फुलब्राइट होती है अमेरिका की. सो हाउ डिड यू एंड अप गोइंग टू हार्वर्ड कैनेडी? थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी. सवाल भी आपने वो पूछ लिया जो विच इज़ लाइक जब मुझे अपनी लाइफ में डिसाइड करना होता है कि व्हाट शुड आई शो ऑफ, तो मैं सोचता हूँ कि IAS शो ऑफ करना ठीक है कि कैनेडी स्कूल का शो ऑफ करना है. तो आपने स्टार्ट किया. रियली आई मीन लाइक at times it's very uncomfortable for me to talk about this Harvard and all that, because somehow I don't know, over a period of time in India it has also become like a symbol of show off. कि अपने बायो पे लिख डाला Harvard, आप 10 दिन भी गए वहाँ पे या कोई ऑनलाइन कोर्स भी किया तो you just want to. तो I have my own disagreements with the way we look at big universities और जो Ivy League जिसको हम बोलते हैं. But then yes, 2018 में when I was like I just wanted to do this. IAS करने के बाद if I thought like there is one big thing which I want to do in my life, तो मेरे आसपास जो बातें चल रही थी तो कैनेडी स्कूल जाना obviously. अब नेक्स्ट टैग वो लगना चाहिए. IAS तो लग गया, डॉक्टर भी कर लिया, तो अब क्यों ना हार्वर्ड alumnus बना जाए. तो I did my little bit of research. करना है तो यही करना है, और पैसे तो जेब में थे नहीं, सैलरी भी उतनी हमारी होती नहीं है कि खुद अफोर्ड कर पाएँ. तो आई थिंक फुलब्राइट स्कॉलरशिप अपने आप में इट केम एज अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी दैट टाइम. तो देन आई वेंट देयर एंड डिड दोस GRE एंड TOEFL. आई रिमेंबर आई वाज डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन दैट टाइम, एंड जब मेरा GRE देना था तो आई वाज सिटिंग विद लिटिल किड्स, और उनके साथ में दिल्ली में आके एग्ज़ाम दे रहा था. मैथ्स का पेपर कर रहा था मैं और TOEFL कर रहा था मैं. तो कभी कभी मुश्किल भी होता है बिकॉज आप एक स्टेबल सर्विस में हैं, यू आर मे बी योर फॉरेन एजुकेशन विल नॉट एक्चुअली एड मच वैल्यू टू योर करियर, बट हाँ जुनून था करना है तो फुलब्राइट हो गया, कैनेडी स्कूल भी हो गया. गुड टू नो दैट यू वर ऑल्सो देयर अराउंड दैट टाइम, but in the same vicinity, not in the same I time. mean like you were in the same city, so yeah, we Just should have across met. the river. Good that we met finally.
नहीं मेरे देर को से ही सही. क्योंकि लोग अक्सर जब अपने बाहर के एक्सपीरियंसेस बताते हैं तो 2-3 शहर होते हैं, न्यूयॉर्क होता है, लॉस एंजलिस होता है, शिकागो बोलते हैं, बॉस्टन वाले कम मिलते हैं. Because the MIT guys all go into tech, Yeah. you know, and the Harvard guys you rarely see because most of them, you know, end up going elsewhere. But a few of them come back and, you know, do the service. तो आपने फिर कैम्ब्रिज की ठंड में वहाँ क्या सीखा? तो हार्वर्ड वालों को ना बड़ा रहता है ये, लाइक दे आर लाइक रूलिंग द रूम, हाँ, अनलेस दे सडनली रियलाइज देयर इज अ गाय फ्रॉम एमआईटी इन द रूम. फिर वो हो जाता है. बंदा ठंडा हो जाता है कि ये And even क्या though हो MIT गया. is not really Ivy League if you think about it, it's almost like a new-ish university. Yeah, it's something totally different. So, but I mean, you may by chance as a false positive also land up in Harvard, but MIT में false positive का होना बड़ा मुश्किल है. वहाँ पे आपको रियल बंदा मिलेगा. हाँ. सो या आई मीन ठंड तो ठीक है, कश्मीर की ठंड भी वैसी होती है मोर और लेस, बट कैनेडी स्कूल में एक चीज़ अच्छी थी, वो ये था कि एजुकेशन सिस्टम वेस्ट ने कैसे डेवलप अपना किया है. आई थिंक सम गुड इंसाइट्स आई गॉट फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आई थिंक विच आई लर्न फ्रॉम देयर वाज, हमारा जो इकोनॉमिक्स का जो प्रोफेसर था, ही वाज फ्रॉम चिले. एंड you know, he used to come, he was a very celebrated kind of an economist. तो वो सुबह जब क्लास में आते थे, तो he used to come in his slippers, shorts पहन के, and with a coffee in his hand, and he was not at all bothered कि मैं कैसे dressed up हूँ, मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ. He would come, start his work, give the best in the class. He was also not worried कि हम क्या कर रहे हैं क्लास में, हम कैसे behave कर रहे हैं, and हम ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन अपने आप को करते थे. तो फिर मुझे एक चीज़ जो ये हमेशा याद रहती है, दैट इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं उन चीज़ों पे विच आर एक्चुअली इमेटीरियल इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. हमें बच्चा चाहिए, ही शुड बी लाइक डिसिप्लिन में बैठना चाहिए, मुस्कुराना नहीं चाहिए. अगर किसी ने क्लास में गलती से पानी का ग्लास लाया तो लाइक वो ये क्या किया तुमने. हाँ, तो हमारे यहाँ पे जो ऑर्डर पे फोकस है ना बहुत ज़्यादा, बिहेवियर पे ज़्यादा है as opposed to पे, education. डिसिप्लिन पे बहुत ज़्यादा है rather than on learning. तो आई थिंक वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस मेरा वहाँ लगा. उसी के पैरेलल में जैसे आप like let's just say if I were to describe in my little opinion that I've, you know, come to form of you through all the things I've read about you and आपके जितनी भी appearances देखी हैं, it seems to me that you've been in a very institutional setting from the moment you were born, like winning institutions left and right. चाहे वो स्कूल में टॉप करना, फिर IAS टॉप करना, and then right. So what was the allure of maybe Harvard जो आप कुछ उनमें से ऐसी बातें यहाँ पे लेके आ पाए? क्योंकि इंडियन ब्यूरोक्रेसी के व्हील्स बहुत डिफरेंट है. वहाँ पे हार्वर्ड में किसी चिली में किस तरह से कुछ काम होता है, या फिर हाउ डज फॉर एग्जांपल लेट्स से microfinancing happen in some part of the world, like implementing those things in a country as complex and as big as India. Were you able to actually implement some of the things you learned there? पहले तो मुझे लगता है जो भी एक इंडियन मिडिल क्लास यंगस्टर है या लोअर मिडिल क्लास यंगस्टर है, उसकी एक एस्पिरेशन है टू गो अप. उस एस्पिरेशन में दो चीज़ें हैं. एक है टू डू जेन्युइन वर्क, टू गेट जेन्युइन अपॉर्चुनिटीज. दूसरा उसमें थोड़ा बहुत जो पहले मैंने बात करी, विच इज़ अबाउट शो ऑफ ऑल्सो, विच इज़ ऑल्सो अबाउट बिकॉज आवर सोसाइटी का जो वैल्यू सिस्टम है, इट्स ऑल्सो अबाउट लाइक राइजिंग अप द हायरार्कीज. अगर आप देखोगे प्रेस्टीज, ऑनर, वी पुट अ लॉट ऑफ फोकस ऑन दिस. हमें दिखना है, मैं भी बड़ा हूँ, हाँ, हम भी कुछ हैं, हमने भी वो किया है जो सब ने किया है. So this sense of achievement which comes जब आप कुछ बड़ा करते हैं, I think that's the first motivation, which may then relate to maybe the idea of power, the idea of prestige जैसे आपने अभी कहा. But besides that, जो हम वहाँ पढ़ के आए, I mean like civil services में necessarily you may not get the posting immediately जो आपने वहाँ से मास्टर्स किया है, उसकी पढ़ाई करके आपको फिर वही काम करने का मौका मिलेगा. लेकिन जो ब्रॉडर चीज़ें आप सीखते हैं जब आप कुछ टाइम काम करने के बाद, when you go back to the school, you get some time to look back and reflect back upon something. वो एक चीज़ जो मुझे वहाँ की लगी, which is like again I keep मैं ऐसा नहीं है that I privilege western education system over the eastern system, but एक बड़ी interesting चीज़ वहाँ है, which is about evidence based policy making. West आपने भी खुद एक्सपीरियंस किया होगा that it
emphasizes science a lot, the scientific temperament. Everything has to be measurable. आपकी मर्जी से कुछ नहीं चलेगा. So as an officer or as a bureaucrat in India, if you have seen, जो भी हम decision making करते हैं, वो बंदे की मर्जी से है. डीसी साहब को ख्याल आया आज मैं ट्रैफिक यहाँ से करूँगा. अगले दिन उसको ख्याल आया नहीं मुझे लगता है कि वो लैंड का जो पैच है इसको मुझे पार्क बनानी चाहिए. तीसरे दिन ख्याल आया आई थिंक आई शुड पेंट दिस बिल्डिंग लाइक दिस, है ना. बट डू वी एवर लुक एट एविडेंस कि क्या सच में ये चलता है भी नहीं चलता, क्या इसकी ज़रूरत है. व्हाट डज, अगर मैंने ये एजुकेशन की पॉलिसी ये मैं प्लान कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं साइकिल दे दूंगा छोटी बच्चियों को सो दैट दे कैन कम टू स्कूल, इट्स अ वेरी नोबल आइडिया. बट पहले मैं देखूं कि जो वो सोसाइटी वहाँ पे है, इज इट रिसेप्टिव टू दिस आइडिया, हैज इट वर्कड समवेयर, वेरी इंटरेस्टिंग. व्हाट एल्स विल इट लीड टू. ये जो ये एम्पिरिसिज्म है, हाँ, जिसको हम एविडेंस बेस्ड बोलते हैं, तो वो एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग का जो कॉन्सेप्ट बाहर आया ना, दैट हैज चेंज्ड अ लॉट इन मी सिंस. ऑनेस्टली आज मैं जो भी डिसीजन मेकिंग करता हूँ मैं पहले उसके बारे में पढ़ता हूँ कि क्या ये ठीक है. इसकी कोई एक इंटरेस्टिंग एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, उसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिसी पैराडॉक्सेस. आप कुछ करना चाहते हैं, होता बिल्कुल कुछ उल्टा होता है. जैसे पुलिसिंग में आपने देखा होगा कि सपोज अगर आप, ये अक्रॉस द वर्ल्ड एक्सपीरियंस है कि अगर आप फॉर एग्जांपल ये जो लिकर होता है, इफ द पुलिस स्टार्ट्स हंटिंग दीज लिकर ट्रेडर्स कि हम जी आपको काम नहीं करने देंगे, जो बूट लेगर्स होते हैं, बूट लेगर्स, हाँ, ये बूट लेगर्स या स्मगलर्स क्या करते हैं, ये अंडरग्राउंड चले जाते हैं. तो पुलिस को इनिशियली सक्सेसेस मिलती है, आपके एफआईआर्स बढ़ने लगते हैं और ये हो जाता है. लेकिन लेटर ऑन उस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए, वो रेवेन्यूज़ को एक्सपेंड करने के लिए वो और फ्रेंचाइजीज देते हैं नीचे ग्राउंड में. तो इन्फिल्ट्रेट इनटू दोज एरियाज जहाँ पे और ज़्यादा हो जाता है. तो ये बहुत एक एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है कि जितना आप कोर्सिव एक्शन करेंगे लिकर के खिलाफ या स्मोकिंग के खिलाफ, इट एक्चुअली इंक्रीजेस. हाँ. While as if you go for awareness, if you go for like social change, changing the behavior patterns, informing, educating, communicating, that works more. So repression does not work. It doesn't work in many of the economic policies या decision making जो हम करते हैं. My point is not that. My point is like कि जो हम evidence based decision making जिसको हम करते हैं, वो बड़ा बाहर उसका बड़ा ट्रेंड है. चलो एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं. करो. अब आपने जैसे मान लो हम बोलते हैं कि यार क्या कहते हैं, let's just say like a country like Switzerland, right? Different than ours, right? उनके गवर्नेंस सिस्टम भी डिफरेंट है, वहाँ के लोगों का भी डिफरेंट है, क्वालिटीज ऑफ लाइफ भी डिफरेंट है, सब कुछ डिफरेंट है. कि वहाँ पे लेट्स से a specific kind of governance system works. अब आपके पास उसका डेटा है, right? Now the problem is you actually haven't done like a small hypothesis test here in India. So how would you go about to be empirical as an IAS officer in the absence of data? In this, would you run small experiments? देखिए अभी बड़ा important हो गया, which is how do you run a pilot? हाँ. One interesting thing happened. You remember अभिजीत बैनर्जी जब उन्होंने अपनी सारी जो उन्होंने काम किया poverty economics पे जो उन्होंने काम किया. He won the Nobel Prize, right? Yeah, he won the Nobel Prize and he popularized something very interesting which is called a randomized control trial. उन्होंने public administration या public policy या governance में randomized control trial लाई development economics में, जो पहले मेडिसिन में होती थी और साइंस में होती थी, जिसमें आप पहले टेस्ट करते हो क्या ये चलेगा एक्चुअली. आपने सपोज वैक्सीन की बात करी, आपने वैक्सीन बहुत अच्छा लाया बाहर से, लेकिन आप जिस कम्युनिटी में जा रहे हैं उनको ट्रस्ट नहीं है आप पे, उनको लगता है इस वैक्सीन से कुछ हमें प्रॉब्लम हो जाएगी. दे विल नॉट टेक योर वैक्सीन. आप कितना भी फोर्स उनको करो, दे विल नॉट टेक इट. आप याद करते होंगे कि कई सारे वैक्सीन ऐसे आए हमारे पास्ट में. पोलियो वैक्सीन पे कई सारे एरियाज में रेजिस्टेंस हुई, हम नहीं करेंगे. कोविड वैक्सीन आया, लॉट ऑफ पीपल डिड नॉट वांट टू टेक इट बिकॉज वी हैड नेवर फैक्टर्ड इन दोज एस्पेक्ट्स के जो माइंडसेट्स है या जो विलिंगनेस टू एक्सेप्ट समथिंग इज आल्सो इम्पोर्टेंट. आपने लाया फिर तो होना चाहिए, नहीं होता. अमेरिका जैसे मुल्कों के अंदर तो वैक्सर एंटी वैक्सर इज लाइक अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल डिवाइड की लाइन भी उधर वही है, क्योंकि उसके ऊपर एक पॉलिटिकल एंटी बना देते हैं लोग कि मैं एंटी वैक्सर हूँ,
hence I represent some values, and I am pro vaccination, I वहाँ क्या represent some होता other है, वहाँ values. क्लैरिटी होती है, वहाँ सारी दुनिया डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के बीच में डिवाइडेड है. रिसर्च भी आप देखेंगे कि डेमोक्रेट्स के साथ ही शादी करते हैं और हाँ. रिपब्लिकन्स के साथ ही अच्छा. शादी करते हैं. या सो इवन मतलब जो मैरिज अलायंसेस हैं वो उनके आपस में वैसे होते हैं. सो यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे भी हम मोर डिफ्यूज, और लोग अपनी पॉलिटिकल लॉयल्टीज बहुत मूव करते रहते हैं. आपने देखा होगा, हम्म. लाइक ऐसा कोई फिक्स चीज़ नहीं है यहाँ पे. यहाँ आज आप एक के साथ हो, अगले दिन आप दूसरे के साथ हो. हम्म. तो उस वजह से जैसे ये जो चीज़ें हैं, जो हम वैक्सीन की बात कर रहे थे, दैट पीपल की जो एक्सेप्टेंस है, इट मे नॉट बी वेरी इजी टू डिटरमिन इन ए कल्चर लाइक आवर्स. हम्म. हमारे कल्चर में बहुत मुश्किल है बोलना कौन बंदे की आइडियोलॉजी क्या है. That's true. मतलब the most you can do is stereotype, क्योंकि वो सबसे आसान होता है. और उसके बाद भी it is not indicative of the person's actual ideology, एंड because you इट can वोंट never हेल्प tell. यू. आप बताओगे ठीक है कि ये बंदा मुझे लगता है ऐसा है, बट व्हेन इट हाँ. एक्चुअली कम्स टू द आउटकम्स लेटर ऑन, इट मे नॉट वर्क. So talking about the things we accept and don't accept, जैसे आजकल स्टार्टअप्स वगैरह को बड़ा हाँ. एक सपोर्ट मिल गया है हाँ. गवर्नमेंट्स की तरफ से. इट इज सॉर्ट ऑफ एंटरिंग even lower middle class and upper middle class families as ki it is an okay profession for your son or daughter to start their own business in a glorified way. मतलब वो दुकान गल्ले पे लगाना बात अलग है, वो भी बिजनेस ही है, बट एक सोफेस्टिकेटेड तरीके से एंटरप्रेन्योर बनना. बट लाइक वी वर ऑलरेडी डिस्कसिंग, बिकमिंग a civil servant or an IAS, IPS, IFS, IRS, जितने भी इसमें सारे स्पेक्ट्रम में वो आते हैं ऑफिसर्स, has constantly been a pride, a symbol of honor in the Indian mind, right? और आपने वो आर्टिकल लिखा था आवाज़ के अंदर, मेरे को बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि यूजुअली अब आपका क्लेम टू फेम ये है कि मैंने IAS को टॉप करा, और आप खुद ही बोल रहे हो कि यार बच्चे, मतलब ये इस तरह से बच्चों की सेल्फ वर्थ को असेस करना मार्क्स के बेसिस पे गलत है. देखिए, I'm glad that you address the dichotomy. जब आप थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं और आपके अपने बच्चे हो जाते हैं, तो शायद तब आप रियलाइज़ करते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे है. मैं अपनी लाइफ में, मुझे लगता है स्कूल से लेके MBBS से लेके IAS से लेके फिर एकेडमी में, आई डोंट थिंक लाइक ये जो पागलपन होता है कि आपको सिर्फ रैंक 1 आना है, आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट एक्चुअली इन माई लाइफ, कि मैं और कुछ कर ही नहीं सकता. लाइक मुझे टॉप करना ही करना है. दिस इज़ लाइक ये माइंड सेट है. वो कहाँ से आती है? वो एक लार्जर इकोसिस्टम से आती है. आपने अपने आसपास देखा है कि सिर्फ इसी चीज़ को रिस्पेक्ट दी जाती है अगर आप बस रेस में आगे दौड़ रहे हैं. उसमें काफ़ी सारी चीज़ें छूट जाती हैं. मैंने इससे पहले भी बात की है कि व्हेन आई लुक बैक एट माई लाइफ, ये जो मार्क्स की मशीन हम बन जाते हैं, आई डू गेट अ लॉट ऑफ एंग्जाइटी टुडे अबाउट दिस. कि मैं सच बताऊं, देयर आर मैनी टाइम्स मैं रात को नींद अचानक से आई वेक अप कि मेरा पेपर मिस हो गया. क्लास 10 क्लास 12 के मुझे वो नाइट मेयर्स आते हैं कि सडनली आई हैव अ क्वेश्चन पेपर इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई एम नॉट एबल टू आंसर इवन अ सिंगल क्वेश्चन. कभी मुझे ये नाइट मेयर आता है दैट आई एम ट्राइंग टू रीच टू द एग्जामिनेशन सेंटर और गाड़ी नहीं चल रही है, एंड आई एम सो एंग्शियस कि मैं पहुंच क्यों नहीं रहा हूँ. एंड व्हेन आई एम लेट आई सी लाइक पीपल हैव ऑलरेडी लेफ्ट. ये एंग्जाइटीज है. या मुझे आज भी ये ख्याल आता है, लाइक मुझे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ रहा मेरे सपने में एंड आई एम अनएबल टू इवन अंडरस्टैंड ये है क्या. आई मीन दिस रियली मैसेस अप योर माइंड. क्योंकि हमने अपनी लाइफ में कभी भी, आई थिंक, फेलियर को एक्सेप्ट करना किसी को नहीं सिखाया. ना हमारे पेरेंट्स ने सिखाया, बिकॉज दे डिडंट पॉसिबली नो. और सोसाइटी में ऑब्वियसली फेलियर्स के लिए तो कोई जगह ही नहीं है. आपने अभी कहा स्टार्टअप्स के बारे में. अगर आपका स्टार्टअप, पहले तो अगर आपने बड़ा कुछ नहीं किया तो उस पर ही आपको टीज करेंगे, यार ये क्या है, चाय की दुकान है. जोमेटो क्यों नहीं बना रहे आप? जोमेटो क्यों नहीं डायरेक्टली बना रहे हो? अप्रिसिएशन नहीं है छोटी एफर्ट का. अच्छा, यहाँ क्या है कि आपने एफर्ट किया, उसका अप्रिसिएशन नहीं है. सारे लोग उस पर ढूंढते हैं कि रिजल्ट क्या है. पर आप ये भी तो मानोगे कि और मुल्कों में इसका नुकसान हम देख रहे हैं, जहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन की ट्रॉफीज मिलती हैं, वहाँ बच्चे बड़े कॉडल बन जाते हैं. ये भी तो एक आर्गुमेंट है. नहीं, सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन में ये है ना कि ह्यूमन नेचर क्या है. पहले आप इसको कॉम्पिटिटिव बना रहे हो और ये मार्क्स भी ला रहा है, ये टॉप भी कर रहा है और ये IIT में भी जा रहा है. होता क्या है फिर उससे? आई मीन व्हाट, लाइक हाउ डज इट रिलेट टू ह्यूमन बीइंग्स लार्जर एग्जिस्टेंशियल गोल्स? ह्यूमन बीइंग इस दुनिया में नंबर मारने के लिए आया है. हम लोग, हाँ, एग्जाम में टॉप करने के लिए आए हैं.
जॉब भी आपने करी. इफ यू लुक एट, आई मीन, व्हाट आर द मल्टीपल वेज ऑफ बीइंग हैप्पी. इट टुक मी सम टाइम, मैं सच कह रहा हूँ. मुझे लगता था सिर्फ डॉक्टर बन के खुशी हो सकती है, हाँ. सिर्फ आईएएस बन के बन सकते हैं. देन आईएएस छोड़ के कर सकते हैं, फिर पॉलिटिशियन बन के ही शायद खुश रहा जा सकता है. सो आई हैव लाइक एक्सपीरियंस्ड ऑल दीज थिंग्स. एंड देन विद टाइम यू रियलाइज दैट देयर आर सो मेनी वेज टू बी हैप्पी इन दिस वर्ल्ड. एंड पॉसिबली जो शायद आपने सबसे बेस्ट चीज़ें देखी थी टू बी हैप्पी, पॉसिबली दे आर नॉट. Yeah. मेरे आसपास जो लोग हैं, आई मीन व्हेन आई सी समबडी, मैं रिसेंटली एक ऑफिसर से मिला. ही इज नॉट इनटू सर्विसेज, ही इज इनटू सम अदर जॉब. ही स्टार्टेड लाइक ही इनवाइटेड मी ओवर टू हिज बर्थडे पार्टी एंड वो खुद गाने लगा. एंड ही वाज प्लेइंग गिटार लाइक अमेजिंग एंड ही वाज सिंगिंग सो वेल. ही वाज सो हैप्पी इन हिज लाइफ. मुझे लगा यार क्या बंदा है. मे बी देयर आर प्रॉब्लम्स इन हिज लाइफ एज वेल, हाँ. but I mean, it all depends on the kind of happiness which you create for yourself than the notion of happiness which the world creates for you. Hmm. अरे ये तरीका है जिंदा रहने का कि सिर्फ जी आईएएस आईपीएस में आप जाओगे तो खुश रहोगे लाइफ में. आई थिंक पिछले 30-40 साल से अब इंडियंस हैव बीन एक्सपीरियंसिंग दिस. आई डोंट थिंक लाइक दिस होल्ड्स ट्रू. Yeah, you're right. मानते हो? नहीं, बिकॉज मैं तो स्टेटस सिंबल्स के उसमें ही हूँ. इनफैक्ट जब मैं डिग्री करके आया था तो और मैंने ये सब करना शुरू कर दिया. हाँ. तो तो आपको भी, आई एम श्योर इट मस्ट हैव बीन लाइक ओके, सो लॉट ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल रेजिस्टेंस टू बिगिन विद. लोग बोलते हैं यार ये तो बड़ी प्रिविलेज सी चीज कर दी आपने. अब आप यूट्यूब पे अब इंटरव्यूज डालोगे, ये तो क्या ही करा आपने. आपने अपने माँ बाप के हार्ड अर्न पैसे वेस्ट करे हैं. आपको कुछ वहाँ बड़ी जॉब लेनी चाहिए थी, कुछ करना चाहिए था अपने. एंड सो यू रियलाइज दैट पीपल वांट यू टू बी ऑन अ वेरी लिनियर पाथ कि, और उस हर पाथ में स्टेटस सिंबल्स लदे हुए हैं एकदम पे. अरे वाह, आपने अब ये कर लिया, आपने अब वो कर लिया, ताकि जब कोई आपकी एलिवेटर पिच किसी और को दे रहा हो तो उसको मुश्किल ना हो समझाने के लिए. You realize that your entire life can be summed up in achievements that other people can say easily to others. You know, like basically, if I say, you know, like I like to podcast, but I also think I like to play the guitar, but I also तो दूसरा बंदा क्या किसको बखान करेगा मेरा कि यार वो है, उसका क्या पता नहीं है, क्या सिस्टम है. You know, did you not feel that when you left the IAS and you know became a politician? तब मुझे लगा ये सब कुछ, तब मैंने एक्सपीरियंस किया. इट वाज नॉट मच ऑफ अ टाइम. कुछ ही महीने थे बेसिकली व्हेन आई काइंड ऑफ वेंट इनटू दिस न्यू टेरिटरी. तब मुझे लगा कि हाउ मच वैल्यू पीपल इन आवर सोसाइटी पुट ऑन द पोजीशन दैट यू आर होल्डिंग. What do you mean by that? Which means that I often keep on having these conversations with my family, which is that okay, when you are in the service, when you are working, more so in these services where there is also some sort of a status associated with what you are doing, you will find a lot of people around you who will tell you that you are the best person in the world. You're the most intelligent and the most brilliant officer in the world. आपसे फेवर भी चाहिए होंगे तो आपसे तो बहुत अच्छी तरह बात करते होंगे. चलो फेवर चाहिए नहीं चाहिए, but still there is this culture of flattery in our system. I think I don't know why, how we have learned. Maybe this is also part of our survival instinct. क्योंकि हम बहुत देर तक अंग्रेज़ों के नीचे रहे. तो कॉलोनियल रूल में क्या रहता है कि आप मास्टर की अपीजमेंट बार बार करने लगते हैं. तो वो जो माइंड है ना, जिसको हम मेंटल स्लेवरी भी कहते हैं कभी कभी. अभी जैसे बहुत बात चल रही है कि वी नीड टू डिकॉलोनाइज आवर माइंड्स. वो क्या है? वो यही है कि आप लाइक willingly, without any requirement, without any compulsion, you get into the role of a slave. आप हो भी नहीं, ना आपको ज़रूरत है किसी की, but you draw some sort of a masochist pleasure in serving, subordinating to somebody, subordinating yourself to somebody, in being like appeasement किसी की करना, which is not really coming from the heart. Somebody who is a stupid guy. There's somebody who is just in the position of power and he is a very bad poet and you are appreciating his poetry. what is the word? The emperor has no clothes. Somebody who is like totally a stupid actor is a part-time like actor and is as an officer or something. और आप उसको इतना खुश कर रहे हो कि यार तुम ही दुनिया में हो. या मैं किसी पोस्ट पे हूँ तो you will tell me like यार आप जैसा तो बंदा मैंने दुनिया में देखा नहीं है. Like you are the biggest intellectual in the world and you really start believing. So I have also seen these people around me. ये जो culture of appeasement या culture of flattery है हमारे आसपास, that happened. वो जब वो चीज़ मैंने फिर छोड़ दी, so a lot of things like got exposed that time मेरे आसपास.
like as if you were like under a mountain of bricks and it is suddenly falling off So on your head. what were the events that sort of led up to you saying कि यार अब मुझे ये नहीं करना है? मैंने तो आपके खाली हाँ, विकिपीडिया को रेफर करा. At some point you decided that I'm मैंने gonna leave पहले it. तो मुझे लगा कि यार अभी तक जो मैं था, मेरा जो आइडियलिज्म था, शायद मैं बात करूंगा तो पीपल विल स्टार्ट क्यूइंग बिहाइंड यू. आपके पीछे हजारों लोग आएंगे. वो जो फेसबुक पे मैंने एक दफ़ा फेसबुक पे पोस्ट डाला कि मेरे साथ कितने लोग आएंगे, वो अपना फ़ोन नंबर दे दें. 12,000 लोगों ने अपने फ़ोन नंबर नीचे डाल दिए. 12,000 पीपल अपने फ़ोन नंबर कमेंट्स में डाले. ये आपको परसेप्शन दे देगा कि शायद ये 12,000 लोग आपके साथ हैं. ये 12,000 लोग 12,000 लोगों के साथ और भी हैं. ये लोलाब रीजन के लोग नहीं थे? नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक इंटायर जम्मू एंड कश्मीर. ऐसा हाँ. नहीं है लाइक कि you get a lot of love, you get a lot of attention, but there are also costs to it. पहले तो you're not sure कि जिन लोगों पे आप rely कर रहे हो क्या वो आपके साथ है. दूसरी बात यह है कि it's a very competitive world. उसमें आपको अपने values, अपने ethics, मुझे लगता है कहीं ना कहीं पे अपने scruples भी आपको साइड में रखने पड़ते हैं. आप शायद जिन लोगों के साथ उनके साथ compete भी नहीं करना चाहते हैं, reluctantly you have to do that. So it brings in a lot of negativity. Honestly, I could not hold it. I could not handle it that time. मुझे लगा यार I am not perhaps prepared for this. शायद मैंने ऐसा एक decision कर लिया जो बिना सोचे समझे था. उसमें कैनेडी स्कूल का भी मैं पार्ट बताऊंगा कि when you go outside, I mean आपने भी देखा होगा, like you feel like as if the responsibility for changing the world is on you. अमेरिका में तो लोग खासकर इसमें यकीन करते हैं कि हम बदलेंगे दुनिया. उनको लगता है हम बदल देंगे. हाँ. नथिंग रॉन्ग इन दैट. मुझे भी वही लगा कि मैं ही बदल दूंगा. पहले तो ये जो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे देते हैं कि आई एम द चोजन गाय, दैट कैन ऑल्सो लीड यू टू मेकिंग लॉट ऑफ रॉन्ग डिसीजंस इन लाइफ. You can have a savior complex. It's the word I was trying to remember it, but savior complex is the word. कि आपको लगता है कि आई एम हियर, आई एम द मसाया और मेरा काम है. मे बी कुछ लोगों के बारे में when they do it, maybe it works for them. But I have something for you that I had prepared, which I will say now, and you can tell me if it's true or not. Right? पानी तेरा चश्मों के का तरपता हुआ सिमाब, बुरघन ए सहर तेरी फजाओं में है बेताब, ए वादी ए लोलाब, ए वादी ए लोलाब. I am liking it. It sounds like AI robotic speech. नहीं ये तो मैं वही कह रहा हूँ, मतलब बराबर लग रहा था जैसे आप पढ़ रहे हैं और वो अच्छा वो मेरे को क्योंकि मेरे को उसकी डिक्शन नहीं आती. बट पढ़ा आपने. आई अप्रिशिएट यू कि आपने ये डिफिकल्ट लाइन पढ़ी. हाँ, तो इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन मैंने थोड़ी सी पढ़ी, पर ये दिस इज अ पोएम अबाउट द लोलाब रीजन. ठीक है, आप वहाँ पले बड़े, राइट? आपकी परवरिश उधर ही हुई और उसके आपने बिल्कुल जस्ट बगल में ही आपने पोस्टिंग भी हुई आपकी. तो this is a romanticized notion of the region, or वाकई में was it so as it's as poetic as this poet describes? Interestingly, as the legend goes कि इकबाल ने he was Sir Muhammad Iqbal, the guy who wrote सारे जहाँ से अच्छा. He has written this couplet about Lolab, but as the research says that he never visited the place. So it was his imagination that you have birds and you have rivers and streams and all those things. है भी वैसा, more or less similar है, but this is also the poet's figment of imagination. It's more or less, I won't be saying that my homeland is not as beautiful. It is definitely. The images on Google certainly say it's very beautiful to look at. It is very, very beautiful place and not very well known. We have in Kashmir like places like Pahalgam, Gulmarg, which are very well known, Sonmarg. Lolab has also now started to emerge as one of the off-road or offbeat destinations in Kashmir where people want to go and explore some sort of serenity and quietness of life. Still very rural, little bit far from Srinagar. तो आपकी जो upbringing थी, was it rural? Were you like It was rural. mountain up to boy? my class 10, I was in a government school, public school, in my village. So in class 11th, I came to Srinagar that time. Yeah. And was Srinagar a big city experience for you? Yeah, from those, I mean, those standards, Srinagar was definitely a much bigger city. We had such a false notion about Srinagar that, like Srinagar is something like an international city. Dal Lake is like the world's one of the biggest water bodies because very few Kashmiris used to get an opportunity to go outside Kashmir. It's a landlocked place, 6 months winter.
Those days, very few Kashmiri students would even go out. Hmm. Honestly, I think I went outside Jammu and Kashmir in the 20th year of my life. 20th. For 20 years, I had never been outside my state. So I had absolutely no idea what the rest of the country looks like. एंड ये तो बड़ा ब्रॉड क्वेश्चन है क्योंकि इतने लाखों लोग रहते हैं, बट आपका लिव्ड एक्सपीरियंस कैसा था? मैं ये बताता हूँ क्योंकि what seems to happen is as the time has gone on and digital presences and opinions and social platforms have all expanded so much, there is a lot of noise around Kashmir. But people, journalists spend their entire lives trying to, this is the truth about Kashmir that you should know. Like इस तरह की headlines सुनते हैं हम. Kashmir has become a very politicized place, and it seems to me that everyone except Kashmir has an interest in Kashmir, understanding कि यार यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ का सच क्या, अपने वीडियो की टाइटल में जरूर डालते हैं कश्मीर का ये सच है. तो just based on your lived experiences, which is very again individualistic, आप पूरी उसको लोगों को represent नहीं करते. But was it really politicized to live there and feel like you are living in some kind of a strife or a place that is potentially full of crime? When this terrorism started in Kashmir, 1988-89, I was 6 years old. So effectively, my entire childhood and adolescence was spent in Lolab, which was one of the hotbeds of terrorism in Kashmir. This place is very close to the border, and this is one of the major infiltration routes. And it used to be a place where I remember it was very difficult for us to spend our days and nights. I mean, when I came to Delhi, in my initial days, when there used to be a cracker blast somewhere outside, even today, if the cracker goes off, or there is noise, or there is something of a sound which is a little bit loud, I start getting palpitations, even today. I get palpitations. You know why? Because for around first 20 years of my life, we have seen so many terror attacks in Kashmir that it used to be a part of our life. और आप लोग as civilians क्या करते थे? क्या करोगे आप? You have I remember the days when you had terrorists. I mean, I have faint memories of those times from Uzbekistan, from Afghanistan. इतनी दूर से आ रहे थे? Yeah. People speaking foreign languages which I still recall as some sort of babble in my ear. के कोई Afghani है, he used those. You remember those days we used to have this withdrawal of Russian forces from. That was the time. So these fighters from those places would then come to Kashmir and start. Mercenaries होंगे mercenaries from those areas would come, and they used to have these long machine guns with them, and they used to be very ruthless, wearing those Afghani caps and long shalwars. I mean, I have very fond memories of those days, that when those people used to literally rule the streets. They would come in the evening, knock at your door, ask you for food. If you wouldn't give the food, they would then maybe in a couple of days, they would either beat you up, or then somebody would say that, okay, this family is a pro-India family, they need to be killed. I mean, we have those memories. It has actually been a horrible time in Kashmir for the last 30 years. You definitely have had tourism and all that. But from 1989 to 2000, I'll say 2006, the worst time that anybody can possibly have in life. And do you think कि because of the kind of special status it had, उसकी वजह से हो रहा था, or simply because it was just a border state, so it was bound for this to happen? You see, Pakistan had made Kashmir as a foundational part of its foreign policy, that we have to create trouble in this part of the Or world. Still does, by the way, ये right? हमें करना ही करना है. This is the raison d'être of a nation. हमें जिंदा इसीलिए रहना है क्योंकि हमें ट्रबल क्रिएट करना है, हमें वहाँ पे मारना है लोगों को. सो आफ्टर 1970s, जब बांग्लादेश का हो गया 1971 में, उसके बाद आई थिंक पाकिस्तान का ज़्यादा ये जो इंसैनिटी एक नेशन की हो जाती है. यू हैव लाइक अ कलेक्टिव इंसैनिटी. You have obsession with a certain place. The only way possibly to avenge
the insult which happened in Bangladesh was by the revenge could possibly have only be taken by separating Kashmir. Hmm. And I think then during 70s these people thought out, okay, let's what do we do? So let's go and first colonize their minds. Hmm. Let's radicalize them first, right? So you had this entire thing in Pakistan happening under Zia-ul Haq in 1970s, when Islamization of the country started to happen. The institutions, the military started to get Islamized, the textbooks started to get Islamized, the religion started to become this political Islam. Church and state started meeting. Political Islam came in Pakistan in a big way, and then immediately, because we were the immediate next targets for that, so it started gradually pouring into Kashmir. And we had new ideologies coming into Kashmir, which possibly nobody had heard of. Kashmir, if you recall correctly, like it is a place where Islam came in its Sufi avatar or Sufi vision, which presented a kind of a synthesis of the Kashmiri Pandit or Shaivite traditions and the Islam which was brought by Sufis, which was Bulbul Shah was one important Sufi, and then Mir Sayyid Ali Hamadani, who came from Iran. He came basically not just as somebody who was there to convert people, but he came as somebody who built the skills. He was one of the, I mean, I'll say he had a mission of skill development that time. He came and taught people Zardozi, embroidery, the making of iron utensils, most of the cuisine, everything came that time with him. It was a totally different form of Islam which was very much rooted in its past. So if you go to a Kashmiri mosque, you will find something very unique there. The way people recite their prayers, that tone is totally different. Because it also represents a certain kind of continuity with the past. So you will see some feeling of the Hindu bhajan, the way they used to recite it. So that continued in the way Kashmiris recite their prayers. So we have this important prayer which was given by Amir Sayyid Ali Hamadani. It is called Avrad or Avrad-e-Fathiya. So it is read usually in the mornings, early mornings. And the way you read it, and the way you read Durood, and the way you read other things in the important shrines of Kashmir, you will feel like, okay, this sound is totally different. It touches you. It's a very mystical sound. It's a very spiritual sound. And the message is very spiritual. It talks about the Nundrishi, the person who is considered to be the master spiritual saint. I mean, I would say the most important spiritual personality of Kashmiris. If you read his poetry, you will find he talks about Hindus, Muslims, about unity and divinity, about the consciousness, transcending religious boundaries and these lines. And then you had Pakistan bringing in this political Islam, which started telling you that, oh no, you're not like, this is something from your Brahminical past. So first, what you do is you tell Kashmiri people, Kashmiri Muslims, that the kind of Islam which you are pursuing or following, this is not the real Islam. The real Islam is this, where you abandon all your, cultural ties with your past, where you recognize that Islam is the only way of life in the world, where you do not have any sort of interface with the other cultures, where your women will have to wear a burqa or you will have to seclude them from the educational spaces, they cannot go to work. So this thing started happening in the late 70s, and by 1988 that place was very much ready to erupt. The moment you had the Soviet withdrawal, and Pakistan was also very much ready to then push these fighters in, and they started their own militancy. New terror outfits came, which they started to call indigenous outfits. Okay, ji, Kashmiriyon ko ab chahiye ji azadi. Can you imagine? I mean, today we are talking at a time when August 5 is just around the corner. I mean, can you imagine a time when in 1947, when the partition happened and the princely states had a choice to either go with Pakistan or go with India? You have a state, a Muslim majority state, who has a Muslim prime minister that time. This state decides to come to India, merge with India, and breaching the standstill agreement, the Pakistan sends its tribals, and the people who are fighting the tribals there are obviously the state forces as well. There's Indian army as well, but the first front line of defense
are the Kashmiri Muslim men and women. The local militia is going and fighting the Pakistani raiders who are Muslims. The first casualty which happens is one of the most important casualties is Brigadier Rajinder Singh. He lays his life, who is a Dogra. So in this environment where people are like beyond their religious affiliations, they want to join India. And these people in 1988, over a period of 70 years, have changed so much that they are raising a rebellion against the nation. And you have a full-blown militancy, which is a more of an Islamist militancy. So this happened because Pakistan had its existential obsession with getting this done. And I think, as you rightly said before, that it continues till today. So Sorry for this longish no. I think kind of historical context to this. the context was important. needed It because was important. because I wouldn't be able to piece this together all by myself. Thank you for that. Which reminds me, so you said that Kashmir with its past was inherently, when jab log bolte hain poems about it being a paradise and about it being like a place where communities coexisted and lived peacefully, that was a truth. And then Pakistan Agar Firdaus barruye zami ast, hami ast, hami ast, hami ast. Which means if there is a paradise on earth, it's here, it's here, it's here. A line attributed usually either to Jahangir or to Amir Khusro. Disputed. That maybe the scholars can tell us. But yes, this is how it was imagined in the past. And gradually we saw this paradise being lost and only being preserved in poems. To Joe, the special, because I was trying to read about the special status that it was granted, right? And I was looking at all the articles that talked about it. From what I understand, उस time पे एक assembly थी, like there was a special constituent assembly, if that's the right word, which had passed इंडिया की स्टेट के साथ, और उनकी आपस में बात हुई थी कि ये एक टेम्परेरी हम आपको स्पेशल स्टेटस दे रहे हैं. एंड देन वो असेंबली डिसॉल्व हो गई, and then Article 370 was considered permanent. Is that an accurate assessment of what happened? If you look at, I mean, how the Indian Republic of today came into being, you have to also understand that one is the India as a nation state, India as a republic, which came into being in 1947, the present republic. But then also you look at the India as a civilizational state, which has a certain continuity from last thousands of years. One thing which differentiates Indian civilization from all other civilizations like Egypt, like Roman civilization, like the Latin American civilizations or others, is that there has not been a break. You cannot today talk about cataphasis in Egypt. That thing is gone. The Romans have gone. The Greeks have gone. Today's Greeks have no relation possibly to what was happening there thousands of years ago. India represents an astounding continuity of the past. So while we had a lot of princely states which had come into being during the process of colonization or during the process of last hundreds of years, India as a civilizational unit was undivided. There was a certain continuity in it. So a lot of, when the formation of dominions happened and India of today and Pakistan of today came into being, so you had some princely states and some part of British India going to Pakistan, some part of princely states and some part of British India going to India. India of today. In that, you gave a choice to some princely states. You go here, you go there. The partition was obviously on the basis of two-nation theory, which was a very unfortunate and one of the most, I think, toxic ideologies to ever have been, thought about on the planet. Kashmir had a Muslim majority population. Okay, so Kashmir was given a choice. What will you do? Kashmiri, the Maharaja of Jammu and Kashmir, he came to India. We had this the agreement of what you call accession. It happened in October 1947. The accession agreement happens. The Pakistan has a certain problem. The constitution building, but meanwhile keeps happening. There is a war going on. The Constitutional Assembly comes into being. You have this special article being put into the Constitution of India, which says that, okay, because you had a war going on. Okay, you had to also pacify a large section of society in Kashmir. So you had this article, which was a temporary article.
in the temporary provisions of the constitution. So you said, okay, this gives certain kind of privileges to the Jammu and Kashmir Assembly. That you have your lawmaking powers, you will have the distribution of powers between the union government and the fed and the state government will be in a certain different way than other parts. So you had similar arrangements like 371 for some other states as well. But under 370, the distribution of powers was very, very specially made for Jammu and Kashmir. Hmm. But I think over the period of time, for next 60 to 70 years, people forgot what happened and how did this 370 come into being. Me, as an educated youngster from Kashmir, who been to college, who has studied history, I mean, my understanding of 370 was also that this is something which is immutable. You just cannot change it. It is unamendable. This is how we have been made to understand over a period of last 70 years, and generations of Kashmiris have understood it that way. That there is this little thin glass ceiling, or there is this little thin glass wall, I'll call it. This glass wall is between the rest of the country and Jammu and Kashmir, given by Article 370. So while you are part of the larger Indian nation, We you are also feel that, separate. okay, you can exercise a certain special identity of your own. But unfortunately, over a period of time, this had definitely led to an understanding that we are not somehow fully part of the national mainstream. Hmm. It takes time to accept it. It took me time to accept it. Because you have to be in the other parts of the country to understand why this thing is a problem. And up to 2019, honestly, I was one of the most vocal supporters of Article 370. Because I thought like it gave us some sort of protection. Against what exactly? That is the question. So you have this sense of alienation which is deliberately, I mean, your minds are trained to develop this sense of alienation, this sense of being something special, being something different, being something which is not part of the larger whole. You may not be intentionally anti-national, but I think somewhere, whenever you talk about these barriers which have been kept, I think it has definitely hindered our process of nation building in the last 70 years. It may not be just in Kashmir. It may be in other parts of the country as well, where you have kept certain provisions where North Indians cannot buy in South India. The South Indian cannot go to Northeast. The Northeast tribal cannot go into non-tribal areas. This language person cannot go to into that language person. So I think what has over a period of time happened is that it has divided us into small silos where everybody is trying to protect his little protectorate, his little province, leading to a lot of provincialist mindset where you've just forgotten what does it mean to be an Indian. What was it supposed to be in the first place? Even जब मैं उसकी language देख रहा था, in all the articles, it said the relationship between Kashmir and India, which when I read that I was very surprised. You know, we have been training ourselves in recent times, trust me. And I keep telling this to Kashmiri youngsters that, whenever you're talking, please never say that when Kashmir, as Kashmiris, how do we feel in India? As Kashmiris, there was this relationship between Kashmir and India. I said, there is this wrong vocabulary which has unconsciously gotten into our minds. Or even when a tourist comes to Kashmir, somebody will very innocently tell him that, okay, have you come from India? Yeah. So this wrong notion of, how do you imagine Kashmir? How do you imagine India? This idea of distance between these two, which has wrongly got inculcated into the Kashmiri mind. I think that is something which is very important, which had to be addressed. And trust me, Article 370, I mean, it has cleared a lot of cobwebs from Kashmiri minds. Phenomenal clarity has come in last 4 years. Some people will be very upset when I say this. Then why are you saying this? Why are you supporting? You used to talk against abrogation of Article 370. But I think it's about coming into grips with the new realities that have happened, and you also look at the same thing from a different perspective, जिसको हम दृष्टिकोण कहते हैं. एक और अपना नजरिया होता है जिससे आपको देखने का मौका मिलता है कि यार अभी तक I used to defend this thing.
are these crores of people mad who are saying that no, आप लोग गलत है? मैं एक बार जरा देख तो लूं हो क्या रहा था इससे. So actually what you observe is that, this wrong notion of being very special, being somehow not part of the nation, and then this emotion being manipulated by Pakistan, and Pakistan connecting it to the larger idea of separatism. वो चीज़ कश्मीरी बच्चे को अभी भी समझ नहीं आई है. बहुत सारे बच्चे अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं to understand this thing, why it is important. So when I say this today, trust me, it gives me a lot of joy to tell my people that, to tell Kashmiri youngsters that, you need to have this clarity in your head that please do not talk about India like this India is as if some koi aisi jagah kahin aur hai. Talk about it as something which is around you, which is part of your past, present and future, which actually defines your identity as a person. जब मैं आपके ट्विटर पे मैंने देखा था, आपने किसी एक व्यक्ति की वो शेयर करी थी किताब, नया कश्मीर करके, या न्यू कश्मीर, आई फॉरगेट हिज नेम, इट्स इन माय नोट्स. Junaid, have you visited it ever since the abrogations in 2019? Yeah, I've been there for quite some time. तो आपको क्या फर्क पता लगा? लाइक क्योंकि एक तो आपका द कश्मीर दैट यू ग्रो अप इन, फिर आप इवेंचुअली यू डिड योर IAS एंड you've been in Delhi, but since the abrogation as it was put in through the जब लद्दाख यूनियन टेरिटरी बन गया and जब कश्मीर became a separate state, what has changed? Like has the state attracted more investments? Is there ऐसा हो रहा है कि कश्मीर के लोगों का हरियाणा में, दिल्ली में आवागमन ज़्यादा बढ़ गया है? Like what has changed? पहले तो मैं बताऊं as an officer what has changed. 2013 I was ADM officer in district. उन दिनों वहाँ एक law and order situation थी. As an officer I had to move around. और आपको पता हमने क्या किया था? We had hired a broken sumo गाड़ी नहीं होती है, वो मैंने खरीदी थी, सॉरी हायर पे करी थी हमने, गवर्नमेंट ने, हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, एंड मैं उसमें घुस के चलता था, so that I may not be noticed, because there used to be so much of stone pelting around कि even ADM नहीं चल पाता था. मुझे भेस बदल के I used to walk in disguise. आज की सिचुएशन ये है that in last 2 to 3 years I don't think we have ever heard about stone pelting. या मुझे याद है बचपन में टाइम्स ऑफ इंडिया में स्टोन पेल्टिंग का फ्रंट पेज पे अखबार पढ़ना कश्मीर के बारे में. स्टोन पेल्टिंग कोई, इट वाज नॉट अ नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन. स्टोन पेल्टिंग से क्या हुआ था कि कश्मीर की एक पूरी जनरेशन आउट ऑफ डिसिप्लिन चली गई थी. छोटा बच्चा क्लास 4 to 5 वाला, which is like 9 to 10 year old kid. Impressionable age. 9 to 10 year old kid who doesn't even know what is happening. He has picketed, he has created a roadblock somewhere, और वो लोगों का ID card check कर रहा है. And when a very elderly guy comes out, and this young boy tells him कि हमने आज कर्फ्यू लगा के रखा है, आप क्यों बाहर निकले? And I recall an incident श्रीनगर में एक जगह पे where a very elderly guy came out and उसको 2 छोटे बच्चों ने पकड़ा और उसका ID card check किया. And when he could not give any reasonable explanation कि मैं बाहर क्यों आया हूँ, these two youngsters 9-10 साल के, इन्होंने 2 बार उसको पीछे से छड़ी से मारा, एक बूढ़े आदमी को. And that man met others and he told them that मेरी अपनी life में, I have been a very senior, he was some teacher or something retired. He said, I have never seen and never experienced humiliation of this order before. It tells you that this society is broken at so many places. तो society, ये law and order सिर्फ security forces के against नहीं था. ये जो stone pelting हो रही थी, इसने हमारी कश्मीर की society को deep down rupture कर दिया था. It had created a generation of youngsters who had no respect for rule of law, who had no respect for any social obligation, who had no respect for anything. It was a band of anarchists जो निकला था, जो आपको कुछ भी कर सकता था रास्ते पे. And one of the greatest things which has happened in the last few years is that this menace has gone away. Ever since the abrogation of Article 370. Number 1. Number 2,
which very few people, I think, will be happy to listen from me when I talk about that. Maybe शायद मैं पहली बार ये बात कर रहा हूँ. Is that one of the greatest innovations in the law and order management in Kashmir, if you ask me, पिछले 30 साल में क्या है, वो ये है कि जब हमने वहाँ पे ये जो funerals हो रहे थे, massive funerals, militants के, वो बंद करा दिए गवर्नमेंट ने. उनको सपोर्ट नहीं करना इवन इन डेथ. No, what happened because of that is ये जो glorification हो रही थी violence की और terrorism की, I can definitely tell you of some people. I was posted there somewhere. One of the biggest, I think, horrific experiences of my life. That there was this guy, like he had just joined terrorist ranks and he was caught up in an encounter somewhere, and the security forces took his little daughter and his wife with a loudspeaker outside the home. They went there and they told him, come out and surrender. And this man is not surrendering. He says, no, it will bring dishonor to me. Can you imagine the sense of this misplaced sense of gallantry, this misplaced sense of honor, and misplaced sense of glory, which had been associated with terrorism? You know why people would do it? A lot of them. Just because you could have a huge funeral then. That's it? Yeah. A glorious death celebrated by many. Celebrating, you had a death cult coming out in Kashmir. And that death cult took so many lives. So many youngsters joined these terrorist ranks just because they wanted glory in the funerals. And you know, when this thing stopped, when government stopped this thing, initially a lot of people felt bad about it. But you see the results of last 5 years. That entire thing has gone down. Yet, so many lives have been saved. So many families have been saved from joining what was definitely a path of disaster. So those changes are visible today. For me, law and order is the most important transformation which has happened. As both a former resident and as an administrator. Now you go to people, as a local officer, I used to get calls, hey, my kid has been arrested by police, can you help us? You have social obligations also. People will come to you. But now if you look at how many people have been booked under Public Safety Act in last 2 years, literally nil. Apart from some people who have been booked under the provisions related to drug addiction and smuggling. How many people joined the terror ranks? Very few. How many cordon operations have been done there in last 2 years? Almost not existent. How many stone pelting FIRs have been registered? How many people are in jails today? It is not there anymore. It sounds surreal at times that how so many lives have been saved in last few years. You have to give the due to the devil. That actually something has changed. Some people may still sound like, no, but this has not happened. No, but the development has not happened. No, but the jobs have not come. You have to look at other places also in the country. You are a part of the larger system. Suddenly you will not have like everybody getting a job in Kashmir. It will take some time. एकदम पे टेक हब बना दिया है और मतलब इमारतें खड़ी हो गई हैं. अचानक से सिंगापुर, अचानक से ये दुबई तो नहीं बन सकता. Right. Change is gradual when it happens. Change is always gradual, but जो चीज immediate दिख रही है, which is very much visible. So then, Shahji, tell me something. Why is it that जैसे आज हम बैठे हैं, tomorrow is August 5 as we're recording this. आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैं अखबार बहुत कम पढ़ता हूँ. मैं ट्विटर से जो सारी अखबारों के वो सब दिख जाते हैं. तो मैं आ ही रहा था आपसे बात करने के लिए. बाय चांस मैं खाना खाते हुए मैंने अखबार खोला तो उसमें आ ही गया कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस टाइम पे कपिल सिब्बल इज फाइटिंग अ केस वेयर ही इज आर्ग्यूइंग फॉर व्हाई इट स्टिल शुड रिमेन. और मैंने आई ओपन अ लीगल सोर्स दैन, वन ऑफ दोज लीगल न्यूज़ वेबसाइट जो पीस बाय पीस सब कुछ बताते हैं कि एग्जैक्टली क्या आर्ग्यू हो रहा है. एंड ही वाज सेइंग कि ऑल द राइट्स दैट वर अकॉर्डेड टू द इंडियन स्टेट were also given to Kashmir. तो फिर रहने दो स्टेटस को, क्यों इतना मेहनत करनी है. दूसरा ही वो सेइंग कि पार्लियामेंट के लोग थोड़ी कर सकते हैं ऐसा कि हम चेंज कर देंगे लॉ को. यूज एंड आई फेल्ट लाइक कि ठीक है, बट व्हाट ही सेज आल्सो मेक्स सेंस. नो
देखिए कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स चल रही है वो अपनी जगह पे है, लेकिन आज 4 साल हो गए 370 को गए हुए. हम्म? कश्मीर हैज changed completely. I mean, it is changed beyond recognition. आप आज वहाँ जाओगे, it's a different place. तो कोर्ट के जो प्रोसीजर्स हैं, वी हैव ड्यू रिस्पेक्ट फॉर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट. वहाँ पे जो जज बात करते हैं उस पर हमारा पॉडकास्ट में कमेंट करना अच्छा भी नहीं लगता है. बट ये भी है कि हर एक डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी होती है. पार्लियामेंट की अपनी विजडम है. कल उस विजडम को कोर्ट कैसे इंटरप्रेट करता है वो इंटरप्रिटेशन के सवाल आते हैं. बट मैं जिस तरह से इसको देखता हूँ कि आर्टिकल 370 का कल क्या होगा पहले तो अभी नहीं है. जो होना है फ्यूचर में क्या होगा, 100 साल में क्या होगा क्या नहीं होगा, कल और आर्टिकल्स आएंगे या आर्टिकल्स जाएंगे. आई थिंक वन इम्पॉर्टेंट थिंग विच द कश्मीरी यंगस्टर needs to understand today, which he needs to be very clear about, is that the future of the state, जो आज यूनियन टेरिटरी है, it has been decided by our grandparents in 1947. आपको आज अगर अपने दादाजी नानाजी के डिसीजन से प्रॉब्लम हो रही है, आई मीन द डिसीजन हैज बीन टेकन. कश्मीर को अगर आप सिर्फ 47 के एंगल से भी देखोगे, आई थिंक दैट डिसीजन हैज हैपेंड. You are part of the nation. You are part of India. You get used to it. You accept this reality कि हमको ये unnecessary दीवारें और unnecessary ये जो हमने चीज़ें बीच में रखी हैं, ये obstacles, it is not going to change any realities. Things have changed in 1947. Or then you go a little bit further and then think about कि तुम लोग हो कौन. As a Kashmiri, when I look at myself, मेरी history 14th century में तो शुरू नहीं हुई ना. I didn't suddenly drop in from some other planet. Right. अचानक से मैं कश्मीर में टपक गया. And I stood up with a cap on my head. ये तो नहीं है. To have a correct perspective of history, you also look back कि मैं कहाँ से आया, हमसे पहले कौन थे, वो कहाँ से आए थे, ये ललितादित्य कौन था, ये अशोका कौन था, who was Kanishk, है ना. ये जो हमारे आसपास ये जो टेम्पल्स हैं ये कहाँ से आए, ये जो हमारी मिथोलॉजी है ये क्या है, ये जो हमारी लैंग्वेज है इसको संस्कृत के साथ क्या रिलेशनशिप है, ये जो कंटिन्यूटी हमारे पास्ट की है, ये जो इंडियन माइंड विच इज़ पार्ट ऑफ कश्मीरी माइंड विच इज़ एम्बेडेड इन द इंडियन माइंड, ये जो सिविलाइजेशनल कनेक्शन आपका है, आपको 47 की भी ज़रूरत नहीं है. दिस इज सो क्लियर. Right. This is clear as the sunshine. So why do many people still oppose it despite the overwhelming positives that you've described? इसलिए अपोज करते हैं बिकॉज आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 70 years जो हमने अपब्रिंगिंग बच्चों की दी अपने, जिस तरह की एजुकेशन हमने उनको दे दी, जिस तरह का हमारे एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनका नाम है अहमद अली फयाज, वो एक बहुत ही यूनिक वर्ड यूज़ करते हैं. ही सेज इट वाज सम सॉर्ट ऑफ एन एम्फीबियन पॉलिटिक्स विच इज़ दैट आप की क्लैरिटी नहीं है आप पानी में हो कि आप ज़मीन पे हो, आप इधर भी हो आप उधर भी हो. एक तरफ से आपको आज़ादी भी चाहिए, एक तरफ से आपको देश के साथ जॉब भी चाहिए, आपको यूनिवर्सिटी में भी जाना है, ड्यूटी भी करनी है, ऑफिसर भी बनना है, और वहाँ से आपको अलग भी रहना है ना. ये कन्फ्यूजन का शिकार आपको पता है एक नहीं एटलीस्ट 3 to 4 generations ऑफ कश्मीरीज हैव बीन देयर. बिकॉज हमने अभी क्या हो रहा है पिछले 4-5 साल से बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो रही है. मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने स्कूलिंग में, यू विल फाइंड दिस एज अ वेरी सरप्राइजिंग थिंग इन माई इंटायर स्कूलिंग, हमें कभी नेशनल एंथम पे खड़ा होने के लिए अपनी क्लास में या अपनी स्कूल में नहीं बोला गया. Seriously? In my entire life in my school, I have never seen a tricolor being unfurled on 15 August or on 26 January. अब आप मुझे बताओ ये हमारे बच्चों की प्रॉब्लम है कि ये उस इकोसिस्टम की प्रॉब्लम है जिसमें ये बच्चा पैदा होता है. मैं इसलिए सरप्राइज्ड हूँ बिकॉज हम तो सुनते थे हिस्ट्री बुक्स में यूनिटी एंड डाइवर्सिटी सब स्टेट साथ में रहती हैं, बट आई ऑलवेज अज्यूम दैट द ट्राई कलर इज लाइक स्कूल असेंबली के अंदर. हमने कभी नहीं देखा. मैं सच कह रहा हूँ कि हमें जनगण मन को याद करने में भी थोड़ा टाइम लगा बिकॉज ये था ही नहीं, किसी ने कभी बोला ही नहीं, टीचर ने खुद कभी नहीं सुना था, वो हमें क्या सुना था. कश्मीर में मैं आज भी देखता हूँ लॉट ऑफ पीपल हैव रेजिस्टेंस टू लर्निंग हिंदी.
अरे जी हम हिंदी नहीं पढ़ेंगे. अरे क्यों नहीं पढ़ोगे? पढ़नी पड़ेगी. वो तो खैर हर किसका अधिकार है, अरे मतलब. पढ़ो भाई, दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है नहीं पढ़ोगे? सो देर आर लॉट ऑफ अभी भी कॉबवेब्स हैं कुछ लोगों के माइंड में, लेकिन उसका जिम्मेदार मैं स्कूली बच्चे को नहीं मानता. इवन मेरी जनरेशन के जो जो आप अभी भी मैं यंगस्टर ही खुद को कंसिडर करता हूँ, तो हमारी यंग जनरेशन के जो लोग हैं जी, हमारी एजुकेशन में, हमारी अपब्रिंगिंग में, हमारी स्कूलिंग में कभी वो चीज़ें नहीं थी. हमने कभी खुद को, हमारे को कभी बताया नहीं गया कि आप किस हेरिटेज के पार्ट हैं. ये सूफी हेरिटेज आपकी क्या थी? व्हाट डज इट मीन टू बी एन इंडियन? एक कश्मीरी का कंफ्यूजन क्यों है इसको? ये आया कहाँ से है? है ना? 14वीं सदी से पहले की हिस्ट्री नहीं बोली जाती थी जी, ये क्या है? और जो न्यूज़पेपर पर डिस्कोर्स चल रहा था, वी हैड दिस ह्यूज कबाल ऑफ राइटर्स हु यूज्ड टू एम्पलीफाई कि जब मुगल एम्पायर अकबर ने यूसुफ शाह चक, हु वाज द लास्ट इंडिजिनस और लोकल एम्पायर ऑफ कश्मीर, उसको जब वहाँ से लेके उसके साथ उसको जेल में डाल दिया, सो दैट इज़ द टाइम व्हेन हमारे रिलेशनशिप ख़राब हो गए. तब तक हम कुछ अलग लोग थे, विच इज़ रफली अराउंड 1586 और समथिंग, 16th सेंचुरी. 13th सेंचुरी में आप, 14th सेंचुरी में आप मुसलमान बनते हो. आई एम सॉरी फॉर सेइंग दिस. 16th सेंचुरी में मुगल इनेक्सेशन होता है. मुगल्स आर ऑल्सो मुस्लिम्स. मुगल कोई एम्पायर, कोई टाटर एम्पायर नहीं थी. बीच में तो 300 साल है, आपको इतनी मेमोरी है कि हम यही हैं बस. उससे पहले क्या था वो आप भूलना चाहते हो, उससे बाद में है वो आप एक्सेप्ट नहीं करते हो. ये जो नरेटिव वहाँ पे बना हुआ था पिछले 50 साल से, उसकी कॉन्सिक्वेंस है जो आपने पिछले 30 साल में देखा कि 70,000 लोग मर गए. 70,000 people lost their lives because you taught people that न तुम उधर हो न तुम इधर हो. It's not easy to say what you're saying because this is a very inconvenient truth. These are the inconvenient truths which are now being told to Kashmiri youngsters. और आज आप देखेंगे a large number of Kashmiri youngsters have come up very organically who are discussing these very contentious topics otherwise कि यार हम आए कहाँ से हैं. And they are very openly raising the tricolor, very openly talking about the civilizational relationship that we as people have had with the rest of the country and being proud of it. And I think that's the change which we need to talk about. That's incredible. Do you ever feel like that because you belong from this state, it is often something that you have to constantly defend and talk about all the time? Over a period of time, I think I have started liking this. You know, this Acha. is a subject which is very close to my heart because my own ideas have undergone multiple transformations. For example, the reason I say this is, for example, जैसे मैं हरियाणा की स्टेट है ना, मेरा पैदा तो मैं दिल्ली के हॉस्पिटल में वहाँ रहता फैजाबाद के अंदर हूँ. अब तो कोई मेरे से मेरी हरियाणवी आइडेंटिटी के बारे में पूछे तो बड़ी लेटेंट सी है वो. I don't have it very well defined. Neither can I defend it properly. Or can I talk about it articulately. So that's what I'm saying. Kashmiri identity is a little bit different from the Haryanvi identity. It comes on my face. मेरे को चेहरे से, आप मेरी नाक से आपको दिखेगा. My nose is my first identifier which tells you that oh ये कश्मीरी लगता है, थोड़ा तोते जैसी नाक होती है. Then my accent, even whatever language I speak, कश्मीरी लैंग्वेज का एक्सेंट आ जाएगा. एंड इट्स अ वेरी यूनिक लिंग्विस्टिक ग्रुप. अपनी हमारी मदर टंग अलग है जो आप बिल्कुल समझ नहीं पाएंगे. लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन आई एम स्पीकिंग इन कश्मीरी, सो पीपल टेल मी आर यू फ्रॉम अफगानिस्तान? आई टेल देम यस यस. ही सेज व्हेन हैव यू कम? आई सेड आई हैव जस्ट कम लास्ट वीक. तो मेडिकल टूरिज्म के लिए आया या या. तो ही सेज लाइक व्हिच हॉस्पिटल आर यू इन? आई सेड बस यहाँ गुड़गांव में जा रहा हूँ. सो पीपल देन स्टार्ट टेलिंग मी व्हाट आर तालिबान डूइंग देयर? आई सेड सच बैड पीपल आई जस्ट कांट टेल यू. तो Kashmiri identity is something which I deeply relate to, no doubt. But I have also I have always taken pride in the larger Indian identity that all these smaller identities get subsumed into. I mean, you have so much of diversity in this nation that, I mean, nothing matters. I mean, nobody can possibly take pride in being distinct in this nation when you have so many differences. Like, Sure. if you say that, okay, I am special because I'm Kashmiri, so I cannot be an Indian, then a Punjabi is also very special. A Tamil is very special. A Northeastern guy is so special. A Bengali is so special.
And Oriya guy is totally special, then everybody is special. Right. So I think the best way to look at your identities is that these are very small, the lower level identities that you Right. have, the religion, the ethnicity, the language group. You have this larger, timeless identity, this river, larger, bigger ocean which you belong to. Those smaller streams get merged into that. I think I will say youngsters across the country need to really relate to that identity. You don't have to really, I think, amplify these subordinate identities which you Right. have, because that is basically where the problem comes from. Because it brings out your base nature. And these are very parochial and very small identities, and then they will definitely lead to clashes. I mean, you are growing as a nation, you're rising in the world as a nation, as an emerging superpower. The world has started listening to you. You're getting respect across the world as Indians. I mean, I have been outside as well, and I have seen like what a privilege it's to be an Indian when you're crossing airports, and your passport does. I mean, it does get a lot of respect. Hmm. People relate to Indians as people who are brainy, people who are innocent. I think people who are like intellectual, huh? Correct. People who are rooted in nature, people who believe in sustainable lifestyles, isn't it? Isn't that the kind of India the kind of Indianness which people automatically presume when you are outside? That's accurate. I mean, that's it. That's the people we are. As far as your day-to-day duties are concerned now, you're in the Ministry of Culture now. So अब आपका different है, you're no longer administrating, say, particular districts, but working within a ministry. So what does that entail? I think the best part about coming to Delhi is that you suddenly realize that you are not actually, you don't belong to these smaller units. That it's not about district and the state and the UT anymore. You feel being part of something big. पहले तो उसी से अपने आप को you feel so good about it कि यार like so many states, so many cultures, so much of diversity. So I think it does fill you with a lot of pride. Although I've just in government of India, like people of my seniority are literally like nobodies. But then you are still at a very crucial decision making point, and the very feeling that you're part of something big and you're doing something for the country. Not that smaller. I don't mean like a Tahsildar or a DC is not doing something for the country. They are doing much more important jobs as well. But I'm saying like the feeling which comes by actually representing, by being this part of the larger thing. And rising above those smaller identities which at times divide us. I think that's ultimate culmination, that you feel okay, ultimately what I wanted to do in the civil services possibly Was create an impact of this yeah, kind. I think that's what I'm doing. Finally you feel like you're working, there's this Indian administrative service. So the Indian part, I mean, you always used to wonder, but I'm in this district, now I'm in this state, now I'm in the Tahsil. No, this I part gets like, आपके tweets तो बड़े philosophical होते हैं. I think philosophy is something. One of my batchmates, he often keeps like stopping me and scolding me that तुम Western philosophy की बात बार बार क्यों करते हो. So, but it has been a passion. I do read a little bit of pop philosophy, you may call it. जैसे what are some I thinkers must that have, I think, read all the important thinkers. Uh-huh. Must have read one of my. I think if you tell me who's your favorite, so think I like Nietzsche. I think Nietzsche is good. Nietzsche is favorite, and I think Hegel. Somebody हाँ, I've been like. मेरे को खाली उनके बोले हुए वो words पता है, Hegelian dialectic ऐसे से ठीक खाली है, बाहर के हाँ, नाम हाँ, पता है. हाँ. But Nietzsche I studied in college, so Nietzsche is something, I think, if you, I mean, you started it, you took the discussion towards philosophy. I think if there's one thing which I feel is missing from our education, both school and college, and also professional education, I think there should be some input on philosophy. 100%. Isn't it? क्योंकि लोग पूरे दिन तो comments में वही करते रहते हैं. I think you need to understand the human mind, and I think one of the most favorite philosophers recently has been, he's more like a celebrity philosopher. He used to be very popular till a few years ago. Slavoj Zizek. Have you heard of him? हाँ, he's a rock star professor. Yeah, he's a rock star. Approach. Not that I believe in any ideology. One good thing about philosophy is that if you read one thinker who is talking about right, then the next thinker will talk about left, and I mean, he will balance it out. I think it's very important for youngsters today. Why I talk about philosophy is that
because it gives you conflicting perspectives, and Hmm. you then approach a problem from multiple angles, and then you understand, okay, there is no one truth. You can steel man two arguments. You can read two opposing schools of thought and And arrive that's the at the best truth. part about you. Yeah. Somebody has said very rightly, I think Einstein has said it, that or Mark Twain or somebody, one of the two, I think, that the most beautiful part about human mind is that it can simultaneously hold two opposite opinions in it. Hmm. And I think it's such a beauty that if you can actually uh, look at a problem and have both the opinions in front of you, and still then make your own judgment. Huh? I see a lot of youngsters these days, unfortunately, getting driven by, like, getting indoctrinated. The problem with ideology indoctrination is that maybe you have not read enough. Maybe you need to Hmm. read one more book. Maybe The you follow virality more than your own thinking. क्योंकि जो चीज चल रही है वो. Yeah, it sounds very convenient. I mean, if you हाँ. read one book, then you feel, okay, this is how the world works. हाँ. But then I think it's very important that you read another, which has been possibly written to critique this book. Yeah. I've also read somewhere that if you get completely convinced by a book every time you read a book, then you need to read more books. I think that's the problem. If every time you feel, wow, this is the book, that actually, breaks the puzzle for me. And I think I have now understood life. I think that moment you say that I have understood life, I think that's the most problematic moment. It happened to me at times. Hmm. Coming back a little bit, when I decided to maybe leave the services, I think that was the moment when I realized that I think I have understood it. Hmm. And I have understood it better than anybody else. And then I take certain decisions in my life driven by this understanding that I know it all. And there is this element of hubris which also comes to your Of mind, course. that मैंने ही समझा है ये चीज़ को सही. And I think all these people who are advising me, they're stupids. Yeah. And then you crash and you burn and you realize that this was not it. And then you make an effort and rise again. But it's needed, right? Because otherwise, if all you do in your life is be right all the time, then like you need to crash almost. Like the beginning of wisdom starts I mean, with it pain. is very painful to crash, and the cost is huge. Trust me, if you have really good people around you who can mentor you, I think it's one thing which I have realized in my life is that you need to have good mentors. Hmm. You need to have people whose experiences, whose mistakes. I mean, you don't need to repeat the mistakes which people have already learned from, right? Why would you want to do the same mistakes which somebody has already done and learned from? So I think it's good at times to also make your own mistakes and learn, but also at the same time, there are bigger mistakes which possibly you need somebody to guide you on, Right. isn't it? I mean, definitely, I'm not somebody who says that you don't need to explore the world. Definitely go out and explore, but you need to also have some sort of a harness, which at times keeps you like Bhagwan Krishna telling you that, okay, this is your journey, you do your duty, but Hmm. this is how it is. Somebody is there to at least guide Someone you. who is a realistic guide of. Someone who's a realistic guide who knows it. Hmm. So I think mentors are important in life. हाँ. And कभी कभी क्या होता है when a mentor tells you something, I my only mentor has been my father and a few professors in college. पर तो आपको बात चुभती है क्योंकि आपके आइडलिज्म से वो खटकती है बात और आपको लगता है कि ये तो इसकी जेडेडनेस है, ये तो ना बुढ़ा हो चुका है, ये तो वो he doesn't understand. बहुत मुश्किल है एक्चुअली. आपने इसको भी देखा जाए तो इट्स वेरी डिफिकल्ट इफ यू टॉक अबाउट ट्रेडिशनलिस्ट माइंडसेट वेयर कुछ लोग तो होते ही हैं कंजर्वेटिव, वो नहीं चाहते हैं दैट यू टेक रिस्क्स. सपोज आपको किसी ने बोला होता क्या यूट्यूबर बनने निकले हो जी, तो बोलते ही हैं. सो आई मीन somebody could have possibly stopped you. Right. But then there are also people possibly who could have been hand-holding you when you started your YouTube 100%. journey. So I'm sure those people who were doing your hand-holding at the time, I'm talking about those mentors, not necessarily those whose traditionalism or whose conservatism is going to be an obstacle in the path of progress. I think you need the right kind of mentors who have actually struggled and stumbled themselves. I mean, it's very easy to be conservative and be safe, but the ships are not built to be kept on the shores, isn't it? Wow. बिल्कुल सिंबद द सेलर की याद आ गई. So I guess to kind of start wrapping things up, let me ask you this.
क्योंकि अब ये तो आपको पता ही है कि देश के अंदर दृष्टि आईएएस जैसे चैनल एग्जिस्ट करते हैं जहाँ वो आईएएस के इंटरव्यूज वगैरह प्रिपेयर करते हैं। क्योंकि हालांकि हमने एजुकेशन सिस्टम के बारे में एक एक ऑनेस्ट ओपिनियन उस पर आपका दिया, लेकिन आपसे बहुत लोग पूछते होंगे कि यार आप स्टडी के लिए कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, हम आईएएस की पढ़ाई कर रहे हैं एंड इट क्लियरली इज अ ड्रीम फॉर मेनी इन द कंट्री, you topped it 13 years ago. uh, how much do you attribute it for to sheer just willpower and how much of it to just good habits? I'm not going to ask you for tips, just that is enough. मुझे लगता है विल पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स एन एग्जाम विच ड्रेन्स यू. द प्रिपरेशन विल ड्रेन यू. Every day you will feel demotivated. I mean, there is absolutely no motivation because there is no clarity what you want to read. इतना तो सिलेबस है, कहाँ पता है क्या पढ़ोगे. इतना तो माइंड आपको ओवरवेल्म हो जाता है. बच्चे मुझे आज बहुत इतने सारे मैसेज करते रहते हैं कि हम क्या करें, डिमोटिवेट हो गए, इतना बड़ा एग्ज़ाम, इतने सारे लोग, उनमें से कुछ लोग इतने हैं जिन्होंने 4 अटैम्प्ट्स दिए हैं, वो तो वेटरन हो गए इसमें, कुछ तो पढ़ा भी रहे हैं, है ना. तो और जब वो आप कोचिंग सेंटर जाते हो, आप किसी और के नोट्स देखते हो एंड यू फील लाइक ओ गॉड व्हेन विल आई रीच देयर. तो द बिगेस्ट आई थिंक गेम इज ऑफ द विल पावर कि आप कैसे मेंटली स्ट्रांग रहेंगे एंड हाउ डू यू रिमेन फोकस्ड ऑन दैट. तो उसके लिए लॉट ऑफ पीपल विल जस्ट crash out of the game because they are not able to maintain that focus, which comes because you can tolerate that anxiety which comes inside you when you are not able to make progress. It is a discomforting journey because I've seen my best friend do it. He, like I said, he cleared the prelims. अब वो दूसरे उसके लिए कर रहा है. भाई हर रोज उससे मिलता हूँ, किसी किसी दिन वो यहाँ पे at the top and the next day is just seeing him struggle with these emotions and then get back up, and some days it takes 2 days. I'm being super honest. और मैं तो सिर्फ वाइकेरियसली देख रहा होता हूँ, यार ये तो किसी और ही बोट में बैठा हुआ है. मतलब I try my best to empathize, but since I've never given a competitive exam of those high stakes, I don't get it. Yeah, it's like being lost in a desert and you have to find your way home. And it's very sunny and you just want to die and you just want to आप अपने प्राण त्याग देना चाहते हो because you just cannot tolerate the sheer difficulty of आपको finding your 2010 का way. भी यही मेंटल इमेज याद आ रहा है. अब तो उसको भी 13 साल हो गए. मुझे 2010 का भी यही इमेज याद आ रहा है because I used to all the time wonder कि क्या करूं मैं इसका, कि stakes are very high. कंपटीशन इतना ज़्यादा है और बच्चे आपके आसपास इतना मेहनत कर रहे हैं अपरेंटली, जो आपके दिन भर वो कोचिंग सेंटर में बैठ रहे हैं एंड आपको खुद पता भी नहीं है कि मैं सही भी कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, कल एग्ज़ाम में क्या आएगा. यूपीएससी माइट गिव यू अ सरप्राइज, है ना. और आपने सारे ब्रिज पीछे तोड़ दिए हैं. मैंने तो मास्टर्स भी नहीं किया था तब, मैंने एडमिशन नहीं लिया था एंड जॉब भी नहीं है. और कॉस्ट्स हर दिन चढ़ रहे हैं आपके. ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत हाई है और इनकम ज़ीरो है, और आउटकम का भी, प्रोडक्ट चलेगा भी नहीं चलेगा कुछ पता भी नहीं है. एक ऐसा बड़ा रिस्की स्टार्टअप है. पटाखे की फैक्ट्री है. पटाखे की फैक्ट्री है, जल सकती किसी भी टाइम. इट कैन एक्सप्लोड. तो दैट एंग्जाइटी आई थिंक कम्स बाय, उसमें मुझे लगता है मेडिटेशन इज़ इम्पॉर्टेंट. बंदे सोल्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर आप इफ़ यू आर सफरिंग दीज बाउट्स ऑफ डिमोटिवेशन, एक तो अच्छी बात आपने करी दैट यू मीट सम पीपल who have done this or been through this, and then you will feel okay, it's a very human kind of thing to do. He's like an ordinary person like me and nothing super human or nothing extraordinary about passing the exam. हो जाएगा. दूसरी बात यह है कि like you keep on reflecting कि why had I started this journey in the first place, why do I need to do this. And I think preparation is not that important jitna willpower important hai, because only those people will reach to the final stage who are deeply motivated about doing this. It's about mental strength, not It's about how much mental you know. strength. वो आप कैसे, how do you hang on at the end of the rope, वो बच्चे को देखना है अपने लिए. और बहुत सारे लोग जिनको mental strength नहीं है, who are not deeply motivated to do this exam, trust me, they should just quit at the right time. उनको क्यों जाना ही है उधर. मतलब हम इसकी क्लिप नहीं काट सकते आईएएस मोटिवेशन करके, क्योंकि आप रियलिटी बता रहे हो. मैं कह रहा हूँ आपको फोर्स करके अपने आप को पुश नहीं करना किसी चीज़ पे. इट्स अ वेरी मैच्योर जर्नी ऑन विच यू हैव सेट ऑन. आप ये कोई खेल नहीं है जिसमें आप निकले हो करने. मुझे लगता है कि
You need to understand that you have gone on a journey which needs mental toughness, which will drain your nerves. और अपने आप को तैयार इसके लिए करो. Be ready for the consequences. And अपने आप को constantly be in a constant dialogue with yourself. And look at your parents maybe at times. Look at your colleagues कि वो क्या कर रहे हैं. Look at those people. Listen to other stories. I think what I used to do is I also used to read a little bit besides the UPSC syllabus. अब थोड़ा fiction पढ़ लो, थोड़ा music सुन लो, अपने आप को अपना human element जो आपका है ना उसको थोड़ा maintain करते रहो. And don't give up the hope. It's like I mean मुझे बड़ा अजीब सा ये लगता है, like there are people who have really gone through very difficult circumstances. There is this lot of Holocaust movies have been, I mean, I'm sure you have seen Yes. Schindler's List. I'm sure like people who talked about Gulag, Solzhenitsyn wrote about the Alexander Solzhenitsyn. Gulag. He wrote about the Gulag archipelago, isn't it? One Day in the Life of Alexander Solzhenitsyn. वो तो author है. Yeah, the Gulag archipelago. That's a different one. The One Day in the Life of Ivan Denisovich. And Ivan, I read that. That's also horror. But it's such great writing. So I'm saying like, you read about people how they have gone through adversity, and that tells you about the limits of human resilience, the limits of human mind, what human mind can tolerate, isn't it? There is this another book which is called it's also on Holocaust, which is the making of meaning, something I can't exactly. Man's Search for Meaning. Man's Search for Meaning, isn't it? Victor Yes, वो Frankl. तो बहुत popular है. Victor Man's Frankl. Search for Meaning, the Victor Frankl. I mean, it's a very small book. A lot of people have read it. I don't mean to any. I mean, this is also. It's not. I'm not talking about the kind of history in which this book is rooted in, but you have to understand the journeys. I mean, what people have gone through. Nelson Mandela, 30 years in prison, and still the hope is there. Right. I mean, UPSC aspirants must also, I think, widen their circle of study. If you feel like if your journey is tragic or you're on hard waters, Yeah. then you should look to further along the spectrum, and you will find I that. had a friend, he used to read Rashmi Rathi. हाँ. वो By Dinkar. रामधारी सिंह दिनकर. By हाँ. Dinkar. And it took me some time to understand what was he reading. And when you read it, like you just have to interpret it in your own way, and then you will realize that what kind of energy does it fill you with. So I think that idealism, that passion, and that willpower to go on is very important. Amazing. Thank you so much for your time and for having such an extensive discussion on all of these topics with equal gusto and equal articulation and equal enthusiasm, and answering all my questions. At this point, I would like to say that I have my curiosity quelled and my curiosity satiated. Thank you so much. Should the desire to learn more from you come once again, as it will, I will. We'll keep meeting. Yeah, maybe I some will. other topic next time. 100%. UPSC has been something which I've been talking about for last. इसलिए मैंने कहा कि एंड में थोड़ा सा Good that लोगों आपने का थोड़ा सा उसका कर दिया. लोगों का मन रखने के लिए कि अरे IAS टॉपर मेरे समक्ष बैठे हैं और मैं ये भी ना पूछूं, तो वो मेरे को बोलते हैं कमेंट्स में, आपने ऐसा कैसे कर दिया, हम तो यहाँ वेट कर रहे थे इस चीज की. So I had to do right by them. But where can people follow you on Twitter? I'm on Twitter, Shah Faesal. Shah Faesal. Yeah, Awesome. I'm only on Twitter, nowhere else. Only on Twitter. Awesome. ठीक है. It was a pleasure to talk to you, and I'm truly inspired by the way your mind works. Thank you so much. It's a pleasure. Thank you.